I'm Mrs. Asma Firdaus, the Secretary of AMP Bangalore chapter, and the host of today's session on career in robotics, artificial intelligence, and data science being conducted by the AMP with the objective of guiding the students towards choosing a right career. Before beginning today's session, I would like to introduce to you what AMP is all about. Can I have this? AMP is the Association of Muslim Professionals. It is a non-profit organization and has completed 13 years serving our community in the field of education, employment, and empowerment. AMP is registered in India, USA, UK, and Australia and has a vision to impact lives of 10 million people by 2030. The achievements of AMP. AMP, under its school development program, has conducted 2,800 plus skill development lectures by connecting with 800 plus schools across the country, by which around 281,000 students have been benefited. AMP also conducts teachers training and parenting workshops under its school development program. AMP has its own employment assistance cell under which it has conducted 360 plus job fairs and job drives throughout the country, enabling employment to around 21,000 plus candidates. It has also benefited 17,000 plus degree students by conducting 220 plus employability training programs. AMP, under its scholarships and self-employment project, has dispersed 800 plus scholarships for higher education. It has also financially supported 860 plus orphans for their education. AMP has transformed hundreds of families by offering self-employment assistance. AMP has its own resource center, which consists of 660 plus career counselors, through which 2,500 plus students have been counseled and guidance has been provided to them to choose a right career. AMP has also connected with many renowned educationists and partnered with several NGOs for its various programs. The year 2020 has been a year of great success for AMP with the launch of 3 new digital initiatives. The indiazakat.com, which is India's first Zakat crowdfunding platform, floated by the AMP with a view to bring the Zakat seekers and Zakat givers on a unified platform. The second initiative of AMP, IndiaMentors.com, strives for the development of a progressive student and a young community in India. The third initiative, AmpPowerJobs.com, is a job portal free for job seekers with comprehensive offerings, including skill training and employability training programs for candidates looking for jobs. AMP's reach. AMP currently has more than 140 plus active chapters, which are spread across 26 states and 16 countries with 6,000 plus active members. AMP has an online presence of 1,25,000 plus members connected over the various social media like the Facebook, Instagram, etc. To join AMP, visit www.ampindia.org/joinamp. This is a brief about the Association of Muslim Professionals. Dear attendees, we are indeed privileged to have Mr. Awab Habib Fakih as the speaker of the day today. Mr. Awab Habib is an educator at AIKTC, that is the Anjuman-e-Islam Kalseka Technical Campus. He is a startup mentor at Startup India and IIT/IIM. Till date, he has filed up to 16 design patent and utility patent under the Government of India. Recently, he has been nominated and appointed as advisory council member in the IPR cell of Maulana Azad University, Jodhpur. He is an awarded entrepreneur from the government of Maharashtra as the best startup idea. He has been session chair, invited speaker, organizing committee member for international conference at Singapore, Philippines, Malaysia, Beijing, Taiwan, and other reputed institutes.
He is a gold medalist at Avishkar Research Competition at local region and district level under PhD category awarded by Vice Chancellor of Mumbai University. Sir, we are pleased to have you as the speaker of the day. Over to you, sir, for the session. Thank you. Thank you so much, Team AMP. Without wasting a single minute, Assalamu alaikum and a very good afternoon to everyone. To all the attendees who are there with us, thank you so much for joining. So basically, the get together and we can say discussion or some transfer of knowledge has been kept focusing on about the career in AI. That the abbreviation itself says that artificial intelligence. Second, the robotics and the data science. So I'll be covering up few perspectives about a child entering from 12th to degree. Either it could be from 10th to diploma in this following domains. Either it could be a people who have already doing engineering and if they want to venture into this fields for it. So basically, when you talk about artificial intelligence, my dear colleague, so it makes the word itself says you are making something intelligent, right? So when you talk about this stuff, so how to go about it and where to start and where not to start, what not to do and what to do. So let's talk about taking case from every different segment. Okay, case number one. Okay, so that everyone is covered. I every whoever have joined because the audience could be from 10th grade, it could be from 12th grade, other it could be from an engineering grad. Okay, so let's cover one by one. So case number one: what if a child is in 10th or if he has cleared 10th? Okay, at this point of time. Okay, so if you have completed 10th, so there is one way where you can venture into artificial intelligence. Either you can venture to robotics, either you can venture into data science. In fact, there are multiple stream also coming up known as deep learning also. So DL, so DS is normally abbreviated for data science and DL is for deep learning. Okay, so this kind of branches you will find it in diploma as well. So if you're really interested for all this stuff, okay, and then you have an option for after 10th as well. Few might be having a question: what if how do we decide which of the subject should be very very powerful? My dear colleague, when you talk about AI or when you talk about ML as well, ML is known as a machine learning. All these are a trending technology. So if you talk about if you want to draw a circle, right? If I want to draw a bigger circle, so the bigger circle would be your AI. Okay, if I need to draw a subset, that means a smaller circle within AI, a smaller circle within AI, so that the smaller circle would be your ML. ML is abbreviation of machine learning. So that is something what machine learning is like. It gives you tools to make your data in a very much a segregated manner. So AI, it makes your machine intelligent, simple as that. Okay, I'll take various much examples so that you will understand the importance of this domain. So the venture, let's be very clear, either you are in 10th, you still have an option. There are in India almost like 30% of the private institutions have already started giving you admissions in diploma in AI, diploma in data science, diploma in robotics. If people who are not having diploma in robotics, it could be diploma in IoT and automation. So robotics have one of the venture is nothing but IoT, that is Internet of Things. Either it could be one of the venture, it could be in automation. So very in few of the cases you won't be getting diploma in robotics, but yes, आपको कुछ कुछ ना कुछ डिप्लोमा इन ऑटोमेशन भी मिल सकता है, डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी मिल सकता है. ठीक है, सो ये डिप्लोमा के वेंचर हिसाब से होते हैं. अब रही बात सब्जेक्ट्स की. अब सब्जेक्ट्स में जो इसमें ये सिलेबस जो है, ये हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या मशीन लर्निंग की बात करें, इसमें जो काम होता है वो दो चीज पे होता है. एक तो आपका मैथ्स है, एक आपका साइंस है. ठीक है, द साइंस एंड मैथ्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये सब चीजों में है. कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें साइंस थोड़ा नहीं आता, मैथ्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. यस, इट विल रियली हेल्प देम बिकॉज एआई जब मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो मैथ्स और ये जो स्पेशली प्रोबेबिलिटी जो है, ये कंसेप्ट, ये काफी कुछ ज्यादा ये सब सब्जेक्ट में काफी अहमियत रखता है. अभी आपका क्वेश्चन अगर ये रहेगा कि व्हाट इफ अगर डिप्लोमा हम कुछ और कराते हैं, ये सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या? देखिए कैसा होता है, कोई भी आप डिप्लोमा कीजिए, डिप्लोमा कोई भी कीजिए, फर्स्ट ईयर सबका कॉमन रहता है. सेकेंड ईयर जब आप डिप्लोमा में आते हैं, ठीक है,
तब जाके आपके सब्जेक्ट्स कैसा है, आपके डोमेन के हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस होने चालू होते हैं। अब रही बात, कुछ मैथ्स है, कुछ टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, वो तो मेजरली सेम। सेकेंड ईयर में कुछ कुछ सब्जेक्ट, कुछ कुछ मल्टीपल ब्रांचेस में आपको सेम मिलेंगे। जैसे अगर मैकेनिकल ब्रांच रहेगा तो मैकेनिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स कुछ रहेंगे, कंप्यूटर रहेगा तो कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट रहेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो आप जब थर्ड ईयर पे पहुंचते हो, थर्ड ईयर आपका इट्स समथिंग लाइक कि आपका कंप्लीटली वो डोमेन की आप पढ़ाई करते हैं। अभी आप कहेंगे सर व्हाट इफ ये फॉरेन कंट्रीज में कैसा होता है, यहाँ पे कैसा होता है? आई टेल यू कि इन फॉरेन कंट्रीज में कैसा होता है, व्हेन आप जब डिप्लोमा करें या डिग्री करें, ठीक है, वहां पे अभी भी जो जो ब्रांचेस है वो जनरलाइज नाम से ही जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ठीक है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन सिविल। ये जनरलाइज्ड जो ब्रांचेस है वो आज अभी भी है और आगे भी रहने वाले हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट क्या है, ये जब ब्रांचेस में आप एडमिशन लेते हो तो स्टार्टिंग, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के 2 साल आपके सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे। उसके बाद थर्ड फोर्थ ईयर कैसा होता है, बच्चों को ऑप्शन दिया जाता है कि आप स्पेशलाइजेशन करिए। ठीक है, तो ये जो स्पेशलाइजेशन है वो डायरेक्टली यहाँ पे इंडिया में काफी कुछ कॉलेज में एक इमीडिएट एक इंडिपेंडेंट ब्रांच ही बना दिया गया है। भाई आपको स्पेशलाइजेशन के अलावा डायरेक्टली एक ब्रांच है, भाई डिप्लोमा इन एआई। ये यहाँ पे ऐसा ऑप्शन फिलहाल नहीं है कि भाई ठीक है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कीजिए और बाद 2 साल इलेक्ट्रॉनिक्स का आप जो मेजर बेस है वो पक्का कीजिए, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन एक चूज कीजिए। स्टिल डिग्री में वो काफी कुछ अभी माइनर स्पेशलाइजेशन काफी कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी स्टार्ट हो रहा है धीरे, स्लो एंड स्टडीली। बट यहाँ पे ये इमीडिएट एज एन इमीडिएट ये ब्रांच आ गया है। ये रही हमारी डिप्लोमा की बात। इफ यू टॉक अबाउट ट्वेल्थ, अगेन ट्वेल्थ में यू हैव द सेम ऑप्शन जो हमें डिप्लोमा में हमें ऑप्शंस थे, ट्वेल्थ में भी हमें सेम ऑप्शंस है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि अब ट्वेल्थ एंड एमएनसीटी मार्क्स विल टेक यू फॉर दैट एडमिशन, ये डिफरेंस आ जाता है आपका। ठीक है, एंड अगेन पीपल हु आर डूइंग इट इन आइदर वेज, अगर आपको लगता है कि यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस इन इंजीनियरिंग, इररेस्पेक्टिव आप कोई ब्रांच के हो, आप ये टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। There are people I know who are from mechanical program who are still doing it. There are people who are from mechanical program who are doing a coding. There are people from electronics and telecommunication who are also venturing into this domain. So आपका domain आपका irrespective है. It's only about your choice. It's only about your learning parameters. वो मायने रखता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि what if हमें कोडिंग कितना important है, कोडिंग करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? Yes, you have to. But the point is that कि you coding से ज्यादा important है यहाँ पे statistical, mathematical आपका concept बहुत important है। So if you feel कि yes, ये mathematics and coding is something like you don't love it, ठीक है, so this should be your take कि हम इसमें enter करें या नहीं करें। Because ये दो subject जो ऐसा है, it will play a very 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 important role जब हम ये तीनों सब्जेक्ट की बात करते हैं। Either it could be data science, either it could be AI, either it could be machine learning. मैं इनके टेक्निकलिटीज में जरा नहीं जाना चाहता हूँ कि इसमें कैसे कैसे वेंचर्स हैं, बिकॉज जहाँ पे जो ग्रेजुएशन जो बच्चे हैं वही समझ पाएंगे, बाकी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। रेस्ट एक ओवरव्यू एक हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ थिंग्स विल रियली फ्लो। अब रही बात यहाँ पे आता है कि वंस यू डू, आप डिप्लोमा करें तो डिग्री करने के बाद हाउ द जॉब मार्केट इसका कैसा है। अब यहाँ पे एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक आप छोटी सी छोटी कंपनी और बड़ी सी बड़ी कंपनी, एवरीथिंग कंपनी, सब कंपनी डिजिटलाइजेशन में जा रही है, नंबर 1। सेकंड, एवरी कंपनी इज गोइंग फॉर ऑटोमेशन विच इज अ पार्ट ऑफ रोबोटिक, जो हमारा डिस्कशन का एक पॉइंट है। आपने देखा होगा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा, जो डेटा को कैसे कोई ट्रैक किया जाता है एंड हाउ एल्गोरिथम कैसे क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ अमेजोन पे कुछ आप परचेज करने की सोच रहे हो, फ्लिपकार्ट पे कुछ परचेज करने की सोच रहे हो, आपने परचेज भी कर लिया, आपने ऐड टू कार्ट कर लिया, बिल पेमेंट नहीं किया, आपका मूड चेंज हो गया। सेम थिंग आप इमीडिएटली कुछ वक्त के बाद अगर आप फेसबुक पे आते हो तो आप प्लीज ध्यान दीजिए, आपको सेम वो एड ट्रैक करने मिलता है। So this is your machine is becoming so intelligent that आपको ट्रैक करे what was your requirement, still आपने परचेज नहीं किया तो वो बार बार आपको शो करे that psychologically you should change your mind. So technology इतनी फास्ट हो रही है, like the time has gone कि कुछ भी अगर सेल होता था कि एक आदमी ही चाहिए सेल्स पर्सन जाएगा, आज की तारीख में डिजिटलाइजेशन हो रहा है सेल्स के लिए। अब कुछ भी अगर सेल्स करना भी होता है, हम लोग ऐड देखते भी है तो ऐड रैंडमली डालते नहीं है कि डिजाइन करके डाल दिया,
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐड किस किस को दिखे, ठीक है। तो फेसबुक में कभी आपने अगर ऐड दिया होगा, अगर आपने नहीं भी दिया होगा, आई टेल यू कि हाउ इट इज, ठीक है। उसका एल्गोरिथम देखो कितना स्मार्ट है, मशीन लर्निंग बेस्ड। लाइक वो आपको कैटेगरीज देता है, तो आपको कौन से एज को टारगेट करना है, उनकी चॉइसेस क्या है, फ्रॉम विच एरिया, विच डायमीटर, एंड उनके आपके हैशटैग्स क्या है, कि उससे रिलेशन कुछ आपको चाहिए क्या है, इज इट इनटू एजुकेशन, इज इट इनटू समथिंग एल्स, इज इट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, इज इट इनटू क्लोथिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इज इट इनटू ज्वेलरी। सो दैट इज द वे इट ट्रैक्स। मतलब आप इसमें अगर ये जो फील्ड ऐसी है, लाइक देर आर फील्ड्स लाइक इन सम अदर केसेस इन सिविल इंजीनियरिंग और समथिंग, जिसमें कुछ कुछ चीजें हैं वो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो फॉलो करती है कंस्ट्रक्शन लाइन में। यस इट डज चेंजेस बट इट स्टिल फॉलो स्टैंडर्ड पैटर्न। यहाँ पे ऐसा है कि व्हेन यू वेंचर इनटू एआई, यू वेंचर इन डेटा साइंस, यू वेंचर इनटू मशीन लर्निंग, डेटा डीप लर्निंग, ये चारों बहुत इमर्जिंग फील्ड है, इसमें कंटिन्यूस लर्निंग बहुत जरूरी है। of a child who doesn't believe in a continuous learning, बैक टू बैक ठीक है, जॉब लगने के बाद या खुद की कंपनी स्टार्ट करने के बाद भी, if you don't believe in continuous learning, it will have a huge impact, because since टेक्नोलॉजी न्यू है तो इसमें काफी प्रोग्रेस हो रहा है एंड द नंबर ऑफ चेंजेस काफी इम्पैक्टफुल आ रहे हैं बिजनेस के हिसाब से। इनफैक्ट आई गिव यू यूएस, इनफैक्ट यूएस ने एक स्टार्ट ओपन अप किया था जस्ट लाइक 3-4 मंथ्स बैक, कि दे आर ओनली इन केस, हम लोग जैसा हम लोग डेटा साइंस की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट ओनली अबाउट डेटा साइंस, दे हैव put down a stats कि US is planning in 2026 they are approaching about 2.6 million data scientists. So that is the scope, खाली एक कंट्री बोल रहा है अपने ओपिनियन, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग उनके पास है, स्टिल उनके दे फील कि यस दिस वुड बी द नीड इन 2026, between 2026 and 2028, that is the need of it. Similarly इंडिया, इंडिया के आप हर इनिशिएटिव पे देखिए, इनफैक्ट इंडिया AI.gov जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, इवन गवर्नमेंट इज इम्पैक्टिंग दी AI। अभी आप जाइए, अ, अभी आप देखते होंगे कि नॉर्मली आज की तारीख में जो कार की फाइन्स होते हैं कैमरा बेस्ड, राइट। इवन जो कैमरा हो गया, पहले वो खाली इमेज कैप्चर करने का, राइट, इमेज कैप्चर करने के एंड देन सो आपका या तो बहुत से बहुत आपके नंबर प्लेट कैप्चर कर लिया, आपको फाइन आ गया। अब यहाँ पे उन्होंने कैमरे को भी AI बेस्ड करने में ऑलरेडी वो ट्रायल वर्जन पे ऑलरेडी स्टार्ट किया गया है, ताकि इवन पीपल हु आर सिटिंग इनटू द कार वो फेशियल रिकग्निशन टैप करके दे कैन गेट टू नो कि हु आर सिटिंग इन द कार एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये टाइप का लेवल ऑफ AI इवन इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर इट। आपको मैं एक और एक बात बताना चाहूंगा AI के लिए। वर्ल्ड में देर इज ओनली वन कंट्री जिसने खाली AI देखो वन एक डोमेन है। आप कोई कॉलेज में जाओगे तो आपको 4-5 अलग अलग डोमेन के आपको एडमिशंस के लिए आपको ब्रांचेस मिलते हैं, बराबर। कम इन थ्रू आउट द वर्ल्ड देर इज ओनली वन कंट्री जिसने AI के लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाई है, दैट इज दुबई itself। दुबई में खाली AI के लिए एक बेस्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने कंडक्ट किया, बिकॉज दैट इज द इम्पोर्टेंस द एवरी वन इज गिविंग फॉर AI एक बहुत बड़ा आपका सबसेट है, उसमें एक ब्रांचेस आपके पूरे आ गए, डीप लर्निंग भी आ गया, मशीन लर्निंग भी आ गया, सब बहुत बड़ा आपका AI हो गया। देन अगेन उसमें एक छोटा सर्कल आ गया मशीन लर्निंग, उसमें अगेन एक छोटा सर्कल आ गया आपका डीप लर्निंग आ गया। सो दैट इज अ टेक्नोलॉजी यू गोइंग फॉरवर्ड फॉर इट। सो एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, पीपल हु आर गोइंग फॉर इट, मेक श्योर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मैथमेटिक्स स्किल्स, you start working on your science part, that will really help you. If not science but the mathematics will play a very very important role, because यहाँ पे आपको दो चीज है, एक तो एनालिटिकल पार्ट है जो हम लोग मैथमेटिक्स हम लोग बात करें, और एक एनालाइजिंग है। एनालाइजिंग बोल सकते हो या क्रिटिकल थिंकिंग बोल सकते हो, बिकॉज इट इज अ चैलेंज। बिकॉज यहाँ पे कैसा है, आप अब एक मशीन को ट्रेन कर रहे हो, यू आर मेकिंग थिंग्स इजियर। लाइक हर जगह आपको पोस्ट कुछ पोस्ट दिखते होंगे, यस पीपल विल लूज जॉब बिकॉज ऑफ AI, पीपल विल सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा नहीं है, देखो चैलेंजेस विल आएंगे, हु विल लूज द जॉब बिकॉज जो टाइम के साथ अपग्रेड नहीं करेंगे, यस दे विल, ठीक है। ये ह्यूमन का इंटरफेरेंस निकालेगा, यस कुछ हद तक कुछ काम में, बट द ह्यूमन डेवलपमेंट विल ऑलवेज बी देयर, राइट। because unless and until a human doesn't develop an architect, doesn't develop an algorithm, so that machine will know कि भाई how to learn। जैसे अभी हम लोग मशीन लर्निंग की अगर बात करें, देयर आर वेरियस वेज मशीन लर्निंग के अंदर आते हैं। देखिए थोड़ा टेक्निकली चीज में जा रहा हूँ, बिकॉज तीन कैटेगरी आती है। एक हम लोग कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं, एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, एक होता है री लर्निंग होता है।
So those are three basic different categories. ऐसा. अब ये अलग अलग कुछ कुछ होता है कि अभी हमें मशीन को लर्न करना सिखाना है, ठीक है. तो एक टाइप ऐसा होता है कि जो आप बोलते हो मशीन को, भाई ठीक है ये आउटपुट है, ऐसा काम करके मुझे ये दो. मतलब आपने बोलोगे भाई ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ हाइट और वेट दे रहा हूँ लोगों का, ठीक है, ये आउटपुट है, मुझे बताओ कि कितने लोग ओबीज है. 1000 लोग आपके पास है, हाइट और वेट दे रहा हूँ, फटाक से मुझे बताओ इमीडिएटली कितने लोग ओबीज है. ओके, तो आपने डेटा भी दिया, डेटा को लेबल भी किया. ओके, लेबल मतलब आप ये बता रहे हो कि ये डेटा काय का है, ये डेटा काय का है, इसको बोलते हैं लेबलिंग. ओके, और आपने आउटपुट भी बता दिया. इन दैट केस ये हो गया आपका सुपरवाइज कैटेगरी. सेकेंड होता है, इसको हम लोग कहते हैं अनसुपरवाइज कैटेगरी, जिसमें आप लेबलिंग नहीं होता है, ठीक है, एंड यू डोंट नो कि व्हाट वुड बी द आउटपुट. तो उसमें कैसा होता है, ट्रायल एंड एरर बहुत ज्यादा पड़ता है आपका. यू हैव टू कीप ट्राइंग इट कि भाई ठीक है इतने सारे डेटा आ गए, उसको स्टडी करना पड़ता है, एंड देन द मशीन इटसेल्फ विल क्रिएट एन एल्गोरिथम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि आपने मशीन को सर्कल वाला कुछ वुडन शेप दे दिया, कुछ रेक्टेंगुलर वाला कुछ वुडन शेप दे दिया, हेक्सागोन वाला कुछ शेप दे दिया, बहुत सारी चीजें आपने उसको दे दी एक साथ. 2,000 पीसेस आपने लकड़े के टुकड़े दे दिए, ठीक है. इट विल स्टडी एवरीथिंग एंड देन इट विल मैप बाय इटसेल्फ कि भाई ये शेप इससे मैच कर रहा है, ये शेप इससे मैच कर रहा है. वो एंड में सेग्रीगेट करके आपको दे देगा, भाई ये सर्कल वाला अलग है, ये हेक्सागोन वाला अलग है, इसकी ये क्वांटिटी है, इसका ये वेट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पे अपने लेबलिंग नहीं किया था, खाली अपने डेटा दे दिया था. और थर्ड आता री इन्फोर्समेंट. री इन्फोर्समेंट का सबसे मैं आपको बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने देखा होगा मेज, राइट. जैसे हम लोग एक पॉइंट पे चालू होते हैं एंड देन वी यू कीप ट्राइंग ना, भाई यहाँ से गए, यहाँ से गए, आपको पता है ये एंड इसका लास्ट है, आप उसको मेज टाइप सॉल्व करते रहते हो. एंड आप अगर आपने आखिरी रास्ते तक पहुंचे, इसका मतलब जो आपने रास्ता फॉलो किया बराबर था. तो आप खुद ही से ट्राई कर रहे हो, खुद से ही रास्ता आप ढूंढ रहे हो, ठीक है. अगर आपने इसको ट्राई किया रास्ता गलत है, तो इसका मतलब ये जो आपने ट्राई किया, अगेन यू गो टू द स्टार्ट पॉइंट, अगेन यू रीस्टार्ट. मतलब यू आर सेल्फ क्रिएटिंग योर न्यू पाथ बाय योरसेल्फ. सो ये तो थर्ड कैटेगरी आती है, मेज वाला कंसेप्ट जो आता है, ये इसको हम लोग कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग. अब यहाँ पे चैलेंजेस ये आता है कि यहाँ पे सिंस ये टेक्नोलॉजी नहीं है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन बहुत बढ़ जाता है. कुछ कुछ लोग के भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उसके हिसाब से कंपनी इसको कस्टमाइज करती है. जब कस्टमाइजेशन होता है तो हर चैलेंज के लिए अलग अपना क्रिटिकल थिंकिंग, हर चैलेंज के लिए हमें अलग कुछ काम करना पड़ता है. दैट्स द रीजन इसको हम लोग कहते हैं कि इसको रीलर्न करना बहुत जरूरी है. जब तक हम लर्न पे रहे, उसको रीलर्न करते नहीं चालू करें, तो थिंग्स वोंट वर्क आउट. ये बहुत जरूरी है ये सब फील्ड में एटलीस्ट, बिकॉज इसमें बहुत बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है. अब जब हम लोग रोबोटिक की बात करते हैं, तो रोबोट अभी जो हम लोग पहले टीवी पे देखने के या हमारी जो इमेजिनेशन होने की थी कि वो सामान उठा के यहाँ पे रख रहा है, ये रोबोट था. अभी आज का जो रोबोट है, इट इज मच मोर एडवांस. यहाँ पे 10 सामान है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसमें से कौन सा सामान उठाए. देयर शुड नॉट बी एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस कि भाई तुम ये सामान चूज करो, भाई ह्यूमन इसको हैंडल कर रहा है, तो वही सामान वो पिक करके यहाँ पे रख रहा है. द मशीन, द रोबोट शुड बी दैट स्मार्ट कि he should know कि which सामान should be picked up and which सामान should be kept where. So that is the definition. अभी robotics इतना level पे आ गया है. So it is not about pick and drop. It is about what to pick and where to drop. What to pick and where to drop. That is the changes have been come. So इससे भी काफी एडवांस हो गया, but this is just for your basic understanding कि हमें क्या क्या आ गया है मार्केट में. Second, apart from data science, यहाँ पे एक one of the very new domain which is upcoming, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है. पहले कैसा होने का, लोग साइबर सिक्योरिटी करने के दे वुड डू 2 months का कोर्स, 3 months का एड ऑन कोर्स करने के बच्चे लोग along with the diploma, along with the graduation. Nowadays डिप्लोमा और डिग्री भी साइबर सिक्योरिटी में आ रही है, काफी कुछ कॉलेजेस में आ भी चुका है यहाँ पे. So if you have a very decent score, if you have a passion for maths, if you have a passion for critical thinking, trust me, ये जो new domains है, आपको काफी काफी effective है. इसमें जॉब्स का हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज दैट इज द की रिक्वायरमेंट टुडेज जर्नी. द ओनली थिंग इज दैट कि यहाँ पे सिचुएशन इट विल बी वेरी वेरी चैलेंजिंग. एट एवरी नाउ एंड देन यू विल बी गेटिंग चैलेंजेस कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको भी हमें इससे सॉल्व करना है. बिकॉज कैसा है, आज का टुडेज जनरेशन ये है, टेक्नोलॉजी से इतना आसान हो गया है. आप देखिए टेक्नोलॉजी क्या करती है, कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज बनाती है विद द टेक्नोलॉजी. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखिए ओला उबेर, जो बहुत सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. पहले भी टैक्सी मिलने की, आज भी टैक्सी मिलती थी. ओला उबेर चला क्यों, ठीक है,
द रीजन क्या था, लोगों को तकलीफ होने की, 10 बार रास्ते पे खड़े तो 10 लोगों को पूछिए, कोई हाँ बोलने का, कोई नहीं बोलने का, राइट। मतलब कस्टमर पे करने के बाद भी कस्टमर हेल्पलेस हो जाने का। व्हाट दे डिड, दे क्रिएटेड टेक्नोलॉजी जिसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसको ऑर्गेनाइज कर दिया लोग ने। सिंस ये क्लाइंट है, कस्टमर एक क्लाइंट है, तो कस्टमर की चॉइस थी कि भाई कब जाना है, क्या नहीं जाना है, उनके पास चॉइस है भाई कौन सी गाड़ी है। सो गाड़ी ये चूज भी कर रहे हैं, अगेन यू हैव अ टेक्नोलॉजी, राइट, दैट विच कार शुड बी अलॉटेड टू हिम एट व्हाट डिस्टेंस। इनके यहाँ पे दिन में कितने ट्रिप है, रैंडमली नहीं होता है, बिकॉज दे हैव टू गिव बिजनेस टू एवरीवन। आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपने देख रहे हैं कि आपके नजदीक कार है, फिर भी आपको एक दूर की कार अलॉट की गई है। So that is the algorithm they do it so that everyone should earn a decent amount. So this is what the algorithm plays a very important role. So algorithm के various types है, let's go not go into deep, but जो आपको ये बोलने का एक मकसद ये था कि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज आज भी बचे हैं इंडिया में, जिसको ऑर्गेनाइज करना है, जो कि टेक्नोलॉजी से हो सकता है, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट योर एआई एंड डेटा। बिकॉज पहले ये कहता था कि भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नथिंग बट ऑयल। तो आज का जो नया ऑयल है वो डेटा है। डेटा वो एक इज नथिंग बट इसको नया ऑयल कहा जाता है, नया तेल है। बिकॉज डेटा मिल तो जाए बहुत, बट वो डेटा को समझे कैसा, ऑर्गेनाइज कैसा कि ये डेटा से हम लोग क्या इंपॉर्टेंट चीज निकाल सके, इसमें ही हमें मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, डीप लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सब टूल्स है ताकि उसमें से हम इंपॉर्टेंट चीजें कैसे सेग्रीगेट करें और कैसे वर्कआउट करें। सो ये थोड़ा एक जस्ट ओवरव्यू था अबाउट मशीन लर्निंग, अबाउट एआई, अबाउट डेटा साइंस, अबाउट योर रोबोटिक्स। अगेन रोबोटिक्स में हमने वापस से रिपीट करे, दो पार्ट आ गया आपका, ए वन इज योर आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगेन आपका आ गया ऑटोमेशन पार्ट। अगेन वन ऑफ द टू थिंग्स हमने जो डिस्कस किया दैट इज व्हाट डीप लर्निंग एज वेल एज मशीन लर्निंग, जो कि टाइटल में नहीं था, बट स्टिल आपके ये पता होना चाहिए कि भाई ये कैसा कैसा वर्क करता है। अब इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, एवरीथिंग कैरीज वेरी इक्वल इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये सभी में काफी मार्केट पोटेंशियल है। मतलब एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, trust me, like from clothing to an hardware to creating a bottle, it could be a Coca-Cola, it could be a water bottle, anything, every manufacturing hub, जो automation hub है, everything is making it automated। बिकॉज कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो हम लोग ऐसा हम लोग बोलते हैं, जो उनका लेआउट होता है, राइट। सो लेआउट में आपने पहले ये प्रोडक्ट अपने समझो अपने बॉटल बनानी है, तो पहले प्लास्टिक के शीट्स पुटअप किए, फिर ढक्कन के शीट्स पुटअप किए, देन that is something, प्लास्टिक बॉटल बन रही है, ढक्कन बन रहा है, देन यू आर पुटिंग इट ऑन इट, एंड देन अगेन वो डिस्पैच होता है। सो एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू मेक योर कंप्लीट प्रोडक्शन इनटू अ ऑटोमेशन पार्ट, ताकि उसमें लेबर इंटरफेरेंस कम आए। तो उसके दो चीज होती है, वन इज द कॉस्टिंग बच जाती है, सेकेंड ये होता है कि आपको प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी होती है वो आपकी स्ट्रेट अवे इंक्रीज होती है, जितना आप लेबर वर्क यूज कम करते हैं। बट अगेन आपने जो लेबर वहां पे निकाल दिया, तो आपने वो लेबर कहाँ पे शिफ्ट किया, टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया। ठीक है, जॉब हर जगह एमर्ज होगी। ये हो सकता है कि ये डोमेन में जॉब खत्म होकर कोई और डोमेन में एमर्ज करे, रिक्वायरमेंट तो कभी खत्म नहीं होगी कोई भी चीज की, राइट। द ओनली थिंग इज कि इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग इट, दैट्स द ओनली रीजन वो हमेशा हमने पुट अप किया कि उसको रीलर्न करना पड़ेगा। इट कुड बी लाइक आज जो एल्गोरिथम एआई एंड एमएल में इट इज वर्किंग वेरी इफेक्टिवली, जो रिसर्च पेपर ने आया है एंड पीपल हु आर इम्प्लीमेंटिंग बहुत इफेक्टिवली है। हो सकता है कि आफ्टर 3 इयर्स इट वोंट वर्क, राइट। दैट डजंट मीन कि वो वहां पे एग्जॉस्ट हो चुका है। इतनी बात है कि हमें उसको कोई नई चीज पे वर्क करके उसको सोल्यूशन देना पड़ता है। So that is the overview about it. I would really help कि अगर audience अगर आप अपने questions put up करें, either it could be with mic, either it could be with chat room। आपको chat room अगर disable नहीं किया है, वो you can put your question into the chat room। I'll take one by one questions with the permission of Q&A with Asma ma'am। So if you can put your questions so that Asma ma'am can take up questions, and I will really try my best to answer every question if possible। Thank you so much। So I'll just request Asma if she can take up the questions, or any AMP representative if they can take up the question. I'll be very grateful to you. There's a question here, sir. What is robotics path after BE? Sorry, ma'am. Can you come again, please? Robotics. What is the robotics path after BE? Okay. So there are Maybe he wants to know what is the the best part is your automation. Again, you have automation. You have various categories.
one of the basic automation when you start with that is with PLC programming. So if you start having that kind of skills, then entering into that robotic automation category would be much easier for you. So if you haven't started with that PLC programming, please, I think since a request, you should start thinking for the same. The next question is Uh, Next, somebody is asking about the competitive exams. Can we read the complete question, or should I read the It question? is just given competitive exams. Okay. So when you talk about competitive exams, there are only one way for when you if you want to venture into diploma, for there is no competitive exams for AI, ML, and data science. But if you want to venture into AI, data science, machine learning, and so on and so forth, after 12th, then you whichever state you belong to, तो आपको वो state की आपको इसके entrance exam देनी पड़ेगी. Yeah, either if you were targeting for NEET and JEE and ITs, then sorry, if you're targeting for IITs and NITs, then JEE, advanced and mains. So these are the only two exams which you have to give if you want to venture into this domain, ma'am. Next question, please, ma'am. Okay. Next is I'm applying for MSc degree in machine learning in the United Kingdom. I wish to go in the field of computer vision. Would you please enlighten me regarding the job opportunities in UK? Hmm. Before the job opportunities, my dear friend, my only the question is that make sure that university falls into the top 100 ranking. It is not about the country; it is about the university. If you really get the good university, uh, the country from even Finland, the country from even USA, the companies from even Canada can come to that university and take you in. So you don't have to worry about the opportunities will I be getting in UK or not. The important point is that the university have to be very good. Make sure that university have that kind of labs for machine learning, because for machine learning you need very high equipped controls, high equipped machines for it to analyze all the data, so very used data. So kindly have a look at the university. At least it should be in top 100, if not top 100, in top 220, top 250. Thank you. Okay, thank you. Next question. What types of sensors and softwares we can use to control AGV? What I'm not sure what it is. So, Mr. Ankur, you can just put a mail to me. I can really help you if you're talking about some project. So over here we are just focusing on the career part. So Okay. I'll just put my email ID, Ankur, for you. You can please post a detailed query about the question. I will be really happy to answer it. Okay, thank you, sir. Asma ma'am, would you like to take over? Asma ma'am? yes, Yeah, I'm please. there. Can you Okay. hear me? Yeah. Thank you, ma'am. Yeah, Please take over. thank you so much. So the next question is, I want to know the difference between data scientist and data analyst so that I can work on the skills accordingly as I'm planning to start giving interviews soon. My only request, because as a fresher, when if you're talking about as a fresher, make sure you're working on the critical thinking part. More than data science, more than analysis part, make sure you are very clear with the algorithm, the way the algorithms are being worked, the way which algorithm could solve what problem. So these are the initial steps when you try to venture your career into this domain. Because when you venture into a company, the requirement would vary from client to client. Okay. So right now, don't fix anything. So just make sure your basics is very clear. If you would be having an experience of about 2 to 3 years, then or this could be a very good question. Thank you. So the next question, can you enlighten me about the scope for entry level or junior jobs in the field of AI around the world? What organizations you know or who cater to these? Okay. So when you talk about organization, my dear friends, there are infinite, right? So the number of companies would who are already into technology, everyone is striving for that. So putting up a number, it would be very difficult. Okay. The point is that again, if you are for an entry level, again the answer would be same. Make sure you are very clear with the probability part, statistical part. Okay. You have a little basic knowledge or intermediate knowledge about the coding part. So this would really help you in getting through it.
more than putting up, because this AI and ML is not only about coding, my dear friend. It is all about the analytical part, because the way you put your coding, the way you'll be solving a problem, that will is really important. So if you would be talking about making a website, okay, if you be talking about, okay, do this thing, if I making a registration form, if I click this should pop up, if I click that, this should pop up, then in that case the complete coding will be involved. So learn coding, get the job. Over here it is all about your analytical thinking, because once again the problem is different for every client. So this is where the difficulty will arise. So focus on your algorithm, focus on the basic concepts before giving an interview. Thank you. So the next question, what is the procedure for taking admission in Dubai AI University? For Dubai AI University, as of now, they haven't started with graduation. To the last year, which to my best of my knowledge, they already had post graduation and they were about to start their PhDs in that. So this year they were supposed to start graduation. You can have a look on online for the application. So even for a seat, or like they were having only 200 seats for even the post graduation, and they were having an application of almost more than a lakh. So that is especially, that was especially for the post graduation for 2 years. But you can still have a look for this year if they have started for graduation. Thank you. The next question, it is hard in the Middle East to get these kind of jobs. What suggestion would you give? Like he's referring to the entry level jobs or the junior jobs in the field of AI in Okay. the Middle East. He's not able Yes. to get jobs there. So it is not about Middle East, sir. It is about for every country. Okay. The only so my only suggestion, if a child is doing a graduation, my only suggestion is that he make sure you start completing your some internship, start doing some projects. Either you're getting paid for it, either if you don't get paid for it during your graduation, make sure you build a good profile on GitHub. GitHub is a platform where you put your all your projects and codes, because nowadays there are companies who ask who will be keeping will keep asking your GitHub profile, because that will show to them ki how technological, how tech savvy you work. No one will be asking your Facebook link, okay? So no one will be asking your Instagram link, but make sure if you are planning for this kind of work, start using GitHub link, because unless and until you don't have some work what you have done it is definitely very difficult. It can for any damn country, for any city, any district, you need to have some work, you need to have some kind of projects which is a real need of time. So doing projects, doing internship will really help them. And even if that is not helping it, so if by doing a project, by doing internship, if you have got some decent knowledge, trust me, as a freelancer there are n number of people who are doing a very good project, and they are alhamdulillah earning a good amount of money. Jazakallah. Thank you. The next question, I have 8 years of experience in software testing. I Hmm. want to shift my career to new technologies as I feel my course is saturated. So, Hmm. can I take up a career in robotics, data science, or AI? And what should I reply when people ask me why you have changed the career? Hmm. My dear colleague, going into robotics, data science, and AI, it's completely your take for it, because, mashallah, sir, the amount of experience what you have, you are, mashallah, very mature to take a decision for it. You don't have to worry about the question, right? The point is that you need to really focus on what you can bring to them, or what you can bring to the table. That is really important. That is the need of the hour. If you can bring a very good critical thinking or very good solution to them in that particular domain, that is enough. Like a very good company won't venture into this. So that is like, after either you venture data science, either you venture into AI. If you develop some kind of projects as a freelancer, uh, you can show to them into the either you could explain to your interviews what was your work. My only suggestion is that you don't leave and study and then go for the interview. Make sure while working, learn these technologies, implement this technology as a freelancer, work for as a freelancer for a year or so, and then venture into this. Because after having an 8 years experience, again starting as a new, uh, as a new candidate into this domain, it will be very difficult for you as a financial part in terms of financial point of view.
So my only suggestion, be into that domain, learn these technologies, implement as a freelancer, and then make your profile, then start giving interviews. That is the right way you can venture into this domain. Thank you. So the next question is, it is told that a person or a student who wants to take up robotics as a career should be well versed in programming of C and C++ language. So Mhm. what if a student does not have a computer background? It should not bother you, my dear friend. The only point is that when you venture into this domain, okay, so it is all about how good Twitter you are associated with. The Twitter, the educator will make that things easier for you. If that person is making it difficult or look difficult, so he is not a good Twitter. Simple as that. So it is not difficult at all. Don't worry about it. It is a fantastic domain. You need to have a fantastic Twitter who can make it look easier, who should relate the difficult stuff with a real life example. So it will make you much easier. Okay, and he will take you forward, because nowadays the one of the most, the advantage is that majority of things have been moving to Python. So Python is much easier than what you said. So if you have not started with Python, trust me, have a look at some few of the YouTube videos. You will really enjoy Python. Thank you. So there is a kid who is 11 years old and he is attending today's session with his parents. Mhm. So I think he wants to know how he can build a career in these three fields, in either of these three fields. So what is Uh, your reply to him, sir? mhm. My reply to him is that as of now, the only priority is that focus on three things. Number one, make sure he should learn as many things as on OBE based, that is outcome based education. That means, for example, if he is doing some project, okay, make sure that project is practical and make sure that project has some outcome. So if that attitude, if he can build up in this 4 years, this attitude will help him to grow in further. As of now, I don't know what curriculum he's going through it. I don't know what is, if he's from CBSE, he's from state board, if he's from IG board. I don't know what about it. But if he can really tap two things, the analytical part, the mathematics part, and a coding part. I'm not saying him to build a website or build a app or something, but the coding will really help him for a critical thinking to get an outcome. Along with that, make sure whatever projects he's doing in his school or any additional for it, so make sure there is some outcome for it. Without an outcome, make sure he shouldn't do any project. And if he's doing it, unless and until he doesn't get an outcome, he shouldn't leave that. So that attitude is very important for this coming years. Thank you. The next question is, as I believe you spoke about the MBZ University in UAE, if I apply and get admitted into it for MSc program, do I have good chances at employment there in the Gulf, provided the fact that I have zero experience? Mr. Mohammed, if you get a chance to, if you get a chance and if you admit to that university, trust me, the first thing is that the Dubai and UAE government will approach you. Simple as that. Forget about moving to any other place, because those people are way ahead in technology. So you should not be afraid, or you should not worry about your job opportunities if you get into that university. So if getting into that university is a challenge, and if you get through, Alhamdulillah, things will work very smoothly, because the profile of people and the research, what I have seen, what they have done into when they have been doing their PhD and postgraduate, it is amazing. So should not worry about it. All the mentors over there are excellent, so they will really help you with that. So you should not worry about their placement, at least in that university. Thank you. Yes, the next question is, what is your take on AI and machine learning in cloud computing, like its future, or how to venture into it? My take, it's excellent. That is the need of the hour, and that is the future which is coming, which everyone can see. Even a unicorn or even a startup, everyone is going towards that technology, and there are many reasons to it. And his second question was,
Like, what is your take on AI or machine learning in cloud computing, like its future, or how to venture in it? Venturing into it, it's completely depends upon what profile you are. I've seen people who have done commerce and still working on AI and ML. Trust me. It is all about the hard work. It is all about the amount of efforts you put into it. Simple as that. The Thank you. next question, yes. So, what do you think about online BSc program in data science and computing degree from IIT Madras? I have seen the curriculum. Yes, the curriculum what IIT Madras they have ventured because which I've seen it is between 3 to 6 years maximum. You can stretch up to 6 years. Yes, the curriculum is good. Curriculum is really good. So if but make sure you go to an offline campus as well. Along with that, if you're doing this online course, it is fantastic. Don't only do this, okay? Because still in India, if you're planning for India, India still have a culture of offline graduation, okay? So have an offline graduation. Do make sure you do that. Along with in addition, you can also do this. And even if like if you talk about IIT Madras about this particular program, so they have three different levels. So even if you leave in first year, you will be getting a certification. You leave in second year, you'll be getting a diploma certification. If you leave in third year, if you complete that course, you'll be getting a graduate certificate. So whichever way you do it, so irrespective of that, you'll be getting some certification, you'll be getting some knowledge where you can easily venture into the technological market. Thank you. So, the next question is, a father is asking, my son is not that good in maths. Will he be able to do AI? Is this a good decision? Uh, Sir, it's completely up to an educator how the things he can make it much easier. If he's still into education, so the person who is teaching it, it is up to him how he can make things easier. Because these fields are very, very challenging, very, very interesting at the same time. Because the challenges what the child will be getting it will be a real time challenges. And if a person really enjoys solving challenges, he will love it, irrespective. Even if he's facing some difficulty in mathematics in his graduation, he will cope up. So that is not a major challenge. Trust me. When I say a student from a commerce background is he is doing a AI, he is doing into working into AI and ML. So a person who is already having a technological background, why not he can? Thank you. The next question, sir, are there openings for freshers as well in UA for data science? Or should I first get minimum experience of 1 to 2 years in India and then try for UAE, which would be a better option? If you want to move out to India, make sure you have an experience. That is the must requirement. And even after you having an experience, and if you cannot show them the projects, your experience even would be nullified. You have to show them what kind of projects and what kind of challenges have you solved it. The tradition of resumes have gone further, like it has evaded. Nowadays they are very, very focused on what kind of work that person has done it and what kind of challenges he has solved during his previous work. So make sure wherever you work, try to solve as many challenges as you can, because that is the point you embed into your resume. Because nowadays every tech giant companies, uh, your resume is not been referred by a human. It is completely scanned by a AI, by AI and ML algorithm. So they pick up the keywords for it from your resume, and the shortlisted resume from the AI ML algorithm that is transferred to the HR department, and those are being called for the interview and so on and so forth. Okay, so your resume have to be very smartly articulated, and your resume should reflect your practical project is very, very important. Thank you. The next question, I come from AIML background doing my BE in AIML. Any tips where should I get a strong hold for career in AIML cloud computing? If you're done your B in AI and ML, so Mr. Mirza, your project should get you a job. Simple as that. Nothing more to say. Because you have, if your project was, if I'm assuming your project would be on cloud computing because you have mentioned that. So if you have worked for a year on cloud computing, you don't have to directly. You should apply for it. Thank you.
There's a question from Afzal. What should we do if we want to take up AI and data science after 12th? Afzal, if you're talking about respect to admissions, as I said, yes, there are almost 30 to 40% of colleges who have already started diploma and degree in AI and data science. So after 12th, whichever state you belong to, there are two ways. Either you have to give your state entrance examination. Either second, if you're targeting for IITs and NITs, you have to give JEE advanced and mains. Thank you. I think we have covered almost all questions. So it was actually a very wonderful and an insightful session. And a big thank you from the entire team of AMP. And we hope to see you in many more sessions as a speaker. So thank you so much, sir, from our end. So thank you so much, everyone, for inviting for this amazing session. I hope we have answered to limit what was your expectation. Jazakallah. Thank you so much. Yes, dear attendees, before winding up the session, I would like to inform you all that the next session is on 14th, and it will be a session on career in banking, finance, and insurance. I would like each one of you to attend the session along with your friends and also your relatives. So thank you so much for attending the session.